outside, getting a car outside. When people used to ask, mixed martial arts, is it growing? You could get out to your car and go and say, I want to go out somewhere, because there was no place to park. And then we decided, let's come to Noida as well, drive a little bit further. Couple of hours we came over here, and this sort of became like a big center where all the fighters started to come. So I have to say, man, the last 6-7 years has been a crazy journey. And very rarely, there are two people that sort of do things when the world is in trouble. One is the BCCI, and one is you and Aisha and Krishna. Big round of applause, ladies and gentlemen, for them. I say this, sport is very difficult to do in this country, and the world over also, when people are, thinking about trying to sort of, curtail. So when it does happen, it's important to applaud at that point of time, because it takes guts, it takes courage to actually do it. So to all the fighters and everyone, welcome to MFN 18. It is going to be a banger tomorrow night and as well as today. Big round of applause to everyone. And all the new fighters, welcome. We're going to chat with everybody slowly. Some would need translations. No problem, we'll do the translations as much as we can. शालिनी बड़ा स्वैग था आपका, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं. मैम बता रही थी कि कंटेंडर्स में ऐसे आए आप, पूरा स्वैग, पूरा एक जो जज्बा चाहिए होता है आपका था, और आज जब यहाँ पे आ गया, आप भी तलवार लेके आ गए आप, तो कैसा लग रहा है? और दूसरा, फाइटर तो आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, मुझे ऐसा लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता. तो एमएफएन का एक्सपीरियंस फर्स्ट डे कैसा लग रहा है? हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है. और इतनी पब्लिक आई, अभी इतना माइक में बोला नहीं, पर काफ़ी नर्वस फील हो रहा है. पर इस फाइट को लेकर मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. और कंटेंडर में तो आप लोगों ने देख ही लिया था मुझको, बट एमएफएन में इससे भी तगड़ा करके दिखाऊंगी. Purushot, congratulations, brother, for making it here. And a lot of the times, we see the fighters, they're locked in with their shades. But Hindi, English, what is more comfortable for you, brother? English. It's a big platform when you come over here. Everyone's out there watching. You've got Disney Hotstar that is going to be there. What is the big message that you sent at home? Everyone says, yes, I want to beat their opponent. But you have lakhs of people, maybe thousands or even hundreds or even 10 at home. What's the big message that has gone home? See, I'm the first fighter who's representing from the south part of the India. So it's just not another fight for me. I'm here to represent something greater than myself. So I will show everything inside the ring. So be ready. So normally he is fashionably late. You were the last fighter to come in, brother. There was lots of preparation going on. Were you preparing for the press conference, or what was it like? Actually, I lost the way. So I was searching for the way. You were searching for the way. Yeah, but I'm glad that you made it here. This is the only spot actually where every fighter that is worth, whatever they've done in their gyms, whatever they've done earlier in the training in India and Southeast Asia, this perhaps is the biggest platform that you can come on. Was it a very, difficult decision? Was it easy? One phone call and you said yes? How did you come to be part of MFN 18? It's just one phone call. Yeah. So I've been in touch with MFN team, and I really like the way they organized, they're giving a good platform. I guess it's the top most and a very great platform in entire Asia, Southeast Asia. So yeah, now I can do like MFN they are doing it. So yeah, always yes for MFN. Yeah, I know. With a phone call? Very rarely, right? Any fighter worth his salt will always say yes. Brother, welcome. English, good for you. Yeah. Congratulations, first of all, on making it over here. The press conference is, I tell you what, until I walk over to somebody, everyone's very confident. The moment they have to say something out there when they see a public, it's slightly different. Tomorrow when you're inside and fighting, you're totally confident. What's the preparation been like? Has there been anything different that you've done? The preparation is all about that I want to make a statement this time. Like all over India, all over world, like people think that Indians have mostly the grapplers, but I want to make a statement that Indian striking is as good as world level. So 2nd of May, you're going to see us making a statement. Is there any fear at all? Sometimes, yes, you got to make a statement also, but sometimes, there's a little bit of fear, which is always good, which is, that nervousness, a little bit there at all or not at all? Yeah, absolutely. I'm making my debut, so nervousness is going to be there. But yeah, I just got to do what I did for the last 2 years, 2.5 years every day. So it's a habit, it's a routine. She sat in there and she came and she gave like a devastating performance. Whenever we see one of the biggest knockouts, strength, power, Sonam's always up there. But now they know your game and they're following you and they're watching every move.
Do you have to do lots of different things each time, Sonam, or you just do what you do and you don't worry who's in front? I think right now I'm the better version of myself. Whatever I was doing, I worked on that. I'm stronger, I'm sharper, I'm like more confident this time. So I'm doing what I'm doing. I'll do what I've always done, but in a better way, in a better performance. She's always the nicest person outside of the cage. When she goes in, it's very different. And I like this little darar that is there, this little gap that is there. You good with English? No. Do we have a translator? What is Pokino? Pokino means you don't know enough. Okay. Then we just know your fists are strong enough that this could be a tough fight. Because if you say something, nobody's going to be able to translate. So we'll skip it then. Perfect. Anyway, well done. All right. Ready? Lots of meditative work, lots of mind work that goes into fights. You know, it's not just about everyone sort of doing the grappling, the fighting, the training, the food. How much of MMA has become a mental game now to win against the opponent? I'm little Okay. Try as much. tomorrow fight and gamer is fight hard. Okay. Thank you, India. Digambar always looks like he's ready for a fight. Brother, कैसा सीन रहा है? क्या एक गैप के बाद जब आप आते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कोई भी फाइटर के लिए, कोई भी स्पोर्ट्समैन के लिए 24/7, 365 डेज परफेक्ट रहने के लिए. तो ऐसा क्या अलग किया आपने या फिर कुछ ऐसा था जो आपने स्विच किया, चेंज किया, ज्यादा अपोनेंट को स्टडी किया या फिर अपने आप को भी टू गेट ओवर दिस लिटिल गैप आल्सो? ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है या मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ. अगर हम देखें तो बहुत कुछ है देखने को, सीखने को, समझने को. तो बस वही है, मेहनत चलती रहती है, हार्ड वर्क चलता रहता है. हर दिन सीखने के लिए अपने आप को पुश करते हैं, वर्क हार्ड करते हैं. तो आई जस्ट वांट टू से टू माय अपोनेंट, यू गिव योर बेस्ट, आई विल गिव माय बेस्ट. लेट्स मेक द फाइट ऑफ द नाइट. आई नो देयर इज नो बोनस फॉर दैट, बट लेट्स मेक इट फॉर द फ्रेंड्स. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. We've got so used to these little in-between lines, no? So for those who don't know, earlier there used to be best fight of the night and all that. You know, there were bonuses. So if you're fighting, then for the best fight, there's been another bonus. So that's why he's talking about. A lot of new people have joined us. That's why it's really cool. But this man is one of our old, torchbearers for MFN, for MMA. The guy's got style. The guy always comes in with his A game. And God forbid Shavanan loses. It's a really, really difficult moment for him to even exit the ring. Exit the cage over there, brother. We don't want to see that over there. We want to see you victorious. लेकिन always आपकी कुछ ना कुछ अलग रहती है. Mentally, आप spiritually भी बहुत inclined हैं. तो इस बार कैसी preparation रही है? First of all, thank you and namaste everyone. Right now, I have already done 9 fights. So of course, I am trying to grow as much as I can. But this time, I want to enjoy the process. That's what I have been working from past 2 years. Enjoy the process, grow as much as you can, and represent India. Wake up, fight, eat, sleep, repeat. Has that been exactly what you've been doing? Yeah, bro. Pretty much. And always a man of few words. Can you imagine we did a 1-hour episode on television with him? 1 hour with him. It was the toughest episode that I did. But now you have to also figure out what else you want to do. It's been few years also. You've grown a little older also. How much has age helped you to become a better fighter also? Yeah. It's been this will be my 5th fight in MFN. I've learned so much. I've grown here, and that's it. Tomorrow, I'm really excited for this fight. I feel like it's going to be a big step up, and I feel like whoever wins this fight is going to fight for the title next. So, let's see. These last few lines are directed straight there at you also. Brother, I love how colorful the outfit is. Hindi, English, what is better for you? English. English, perfect. You know, this is incredible when you see different fighters coming from all over the world to fight. This has been the dream of everyone, to see the best platform to fight against the best fighters, then to prove you're the best. So just your experience of being part of the MFN, let's hear that.
First, I want to say everyone's saying I look like Jackie Shroff, but honestly, I did not copy him. It's just when two people have good style, I guess we end up looking looking like each other. But yeah, I didn't copy him. Sorry, what was the question? Otherwise, just being part of MFN, how's it been in just the whole process for you? For me, it's great. It's very professional. Like I feel like a proper professional. Like it feels like UFC level. I feel like it's like gearing me towards that. So when I'm in the biggest platform, it feels normal. So it's like a good stepping stone. ब्रदर को फाइट करते हुए देखने के लिए इमोशनल भी ये रहते हैं, क्योंकि इनका भी एक ऋण होता है सारे ऑडियंसेस के लिए कि अगर वो मुझे देखने आए हैं तो मुझे एक ऐसा जबरदस्त फाइट देना है that they should all win. बागी साहब कैसे हो? बढ़िया जी। और हर बार मुझे ऐसे ही लगता है कि आप अपने लिए भी फाइट करते हो, आपके फैंस के लिए भी करते हो, आपके ऑनलाइन फैंस के लिए भी करते हो, आयशा मैम के लिए भी करते हो, ताकि लोग आके देखें मुझे ऐसा बनना है। तो इस बार भी आप जैसे शाम है, आप भी एक वेटरन बन चुके हैं एमएफएन के, बहुत सारे फाइट्स का हिस्सा बन चुके हैं, तो आज वो एक्स्ट्रा स्पेशल फीलिंग क्या आती है एक दिन पहले और फिर कल के लिए? मेरा जो मेन विजन है एमएमए को लेके, मेरा मेन विजन ये है कि मैं दिखूं और मेरा एमएमए दिखे, हर जगह दिखे, तो मैं उसके लिए फाइट करता हूं। और ऑफ कोर्स आयशा मैम के लिए, मेरे मतलब इंडिया में आप अंबानी और अडानी भले पैसे से अमीर होंगे, बट दिल के अमीर आयशा मैम है, जो एमएमए के लिए इतना मतलब चीज़ें कर रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंडिया में सबसे ज़्यादा अगर दिल से अमीर है तो आयशा मैम है, जो हमारे लिए इतनी चीज़ें कर रही है। ब्रदर बहुत बोला उन्होंने, लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू आल्सो वांट टू से, कुछ बोलना चाहते हो ज़्यादा या फिर कम शब्दों में ही आगे बढ़ेंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आया भाई ने क्या बोला, बट लेट मी थैंक फर्स्ट आयशा मैम, कृष्णा मैम, ध्रुव सर फॉर दिस ह्यूज अपॉर्चुनिटी आफ्टर दैट लॉस, एंड मैम आई प्रॉमिस यू गाइस to tomorrow night there will be different Aminder inside the cage. Thank you. Sai brother, how are you doing? Doing well, man. How's the training been? Somebody who's fought through so many different mishaps, and I've seen that personally as well, always come out given his best out in the cage. Injuries are part and parcel of every fighter's unfortunate or fortunate journey. It's just something that always there. But he's got great heart inside. You've always fought with great heart, and good to see you back. What's the preparation been like? Everything been perfect? Anything different that you've done? Yeah, prep has been great this time. I worked my ass off. As for all the mishaps, it's part of life, man. Happens. Prep's been great. This is the best shape I've ever been, and just willing to kill, prepared to die. And that being said, I don't know why the fuck is everybody copying me today. Forget about the boys. I mean, even the champ is looking at me. Why is everybody putting on the white vest, man? Hindi, English, brother? हिंदी। इसको देख के आपने भी व्हाइट पहना हुआ है क्या? बाकी सबने भी व्हाइट पहना हुआ है, आपने कैसे डिसाइड किया आज व्हाइट पहनेंगे? ये मेरे पुराने टीममेट है, शायद में भी यूनिवर्स ने कोइंसिडेंस कर दिया। यूनिवर्स ने कोइंसिडेंस कर दिया। वैसे कितने एक्साइटेड हो दुनिया को अपना स्किल दिखाने के लिए? सिर्फ जो लोग स्टेडियम में वो नहीं, वहाँ 10-15 हज़ार लोग आ जाते हैं, और वो भी 15 हज़ार लोग जब आवाज़ करते हैं तो बहुत मजा आता है। लेकिन जब टीवी पर आता है, ओटीटी पर आता है, आपके घर वाले भी देखते हैं, घर वाले दूसरे और लोगों को बताते हैं, तो घर पे कैसे प्रबंध किया हुआ है कल के लिए? पूरे मोहल्ले वाले, पूरे गाँव वाले सबको बुला लिया है? कैसा सिचुएशन है घर पे? गाँव में और घर पे तो सब लोग ऑनलाइन ही देखेंगे। बाकी इस बार ये फाइट में पब्लिक के लिए तो खेल ही रहा हूँ, बस सबसे पहले मैं अपने लिए खेल रहा हूँ। आफ्टर 14 मंथ ये मेरी सेकंड फाइट है, तो इस फाइट के बाद मैं रुकने वाला नहीं हूँ गाइस। 14 month 4 camp with India's best fighters. So this time we're gonna see different from each other. Last time I gave a good performance, but this time 15-minute clear war, every second war. So be ready. Coming right to the last two, and that's going to be, I think that the face-offs are going to be something else. We've got so many of the coaches also here that have flown in, that know their wards are sitting here. Jitesh sir is there, so many others, and you have so many expectations. Expectation is a big word. Hindi, English, brother, which is better for you? Hindi. Expectation बहुत ज़्यादा होती है, आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ MMA फाइटर्स जो हैं फैमिली से लड़ाई करके आए होते हैं ये फाइट करने के लिए, क्योंकि वो कुछ और कर लो, अगर स्पोर्ट भी खेलना है कई बार कुछ और स्पोर्ट भी खेल लो, तो वो एक्सपेक्टेशन बड़ी रहती है।
आयशा मैम को भी डिसपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, जब उन्होंने चूज किया है तो आपको वो भी दिखाना है, बाकी जो OTT पर भी देख रहे हैं उनको भी डिसपॉइंट नहीं करना चाहते हैं, तो उसके बारे में वो जरा बताएं। नो प्रेशर, बट जैसे सोच कैसे रहती है और घर से क्या सपोर्ट मिला है? नहीं, सपोर्ट तो मिला है घर से बहुत, लेकिन ये हुआ था कि जो 2023 में मैं MFN कंटेंडर जीता था, उसके पहले घर वालों ने बोला था कि अगर तुम ये हार गए तो फिर गेम छोड़ देना। तो फिर वो मतलब जीतने के बाद थोड़ा कंटिन्यू हो गया था मेरा गेम, तो वैसे फिर सपोर्ट कर रहे हैं अभी भी मतलब। और मैं तो अगर 23 का कंटेंडर नहीं जीतते कुछ और करना पड़ता? तब तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता बहुत ज़्यादा, मतलब इसलिए मैंने उसके लिए मतलब 6 महीने से मैं हर दिन 5 सेशन ट्रेनिंग करता था। मेरे को 2 बार बुखार भी हो गया था ऐसे ट्रेनिंग करते करते MFN कंटेंडर के लिए। अभी सही है। अभी लास्ट फाइट में MFN 16 में किया था, तो वो फाइट जल्दी फिनिश हो गया था, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि मतलब थोड़ा मतलब ऐसे ही किसी भी फाइटर को ऐसे नॉकआउट कर दिया, लेकिन वो जो मेरा लेफ्ट हैंड है ना, वो किसी को भी गिरेगा तो वो गिर ही जाएगा। तो वो मतलब मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरा ट्रेनिंग पार्टनर सब भी बैठा है, और जो भी मेरे साथ ट्रेनिंग किया होगा ना, उसको मैं पंच मारूंगा ना तो किसी को भी फील होगा, वो गिरेगा ही। तो लास्ट टाइम मेरा फाइट थोड़ा छोटा था, 1 मिनट 20 सेकेंड का था, तो इस बार मैं थोड़ा अपना फैंस के लिए फाइट करूंगा। आप ऐसे किसी को फॉलो करते थे कभी? बिकॉज इट्स अ बिग ओकेजन टुडे। इज देयर एनी फेवरेट फाइटर ऑफ योर्स जिसको आप देख के बोलते थे यू नो दिस इज द काइंड ऑफ करियर आई वांट, मुझे ऐसे फाइटिंग करनी है, मुझे ऐसा ग्राफ चाहिए? जब से स्टार्ट किया है तब से तो काफ़ी ऐसे फाइटर्स है, बट अपनी टीम में उनको देख के हम हर दिन मतलब ऐसा होता है कि मतलब इनके जैसा बनना है, जैसे स्पेशली आवर कोच अंगद सर, तो उनका रूटीन, उनकी चीज़ें, तो मतलब अभी तो उनका 1% भी नहीं है, बट ये है कि उनकी जर्नी, उनकी जो थॉट्स है और ये सब चीज़ें हमें रोज़ मोटिवेट करती है, और हर दिन ऐसा लगता है उनके जैसा बनना है, तो हम कहीं ना कहीं उनके जितना कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सो दैट्स इट। Yeah!